So today we'll discuss about this switch statement. Okay. Now when to use this switch statement. Okay. So whenever you want to compare any value with a expression, means you have an expression and the result of that expression is to be matched with fixed constant values. Okay. Different values are there. And associated with each value, there is set of statements. You can call it as ARM or a block of code associated with every value. Okay. So these are some constant value, and with every value, there is an associated statement. And now at runtime, you want to evaluate that expression and match with the value. Now, if the expression matches with any value, its associated statement should get executed. Getting? So in such situation, you can use switch statement instead of using a chain of if else going on. Getting? In that case also, suppose you have a variable and you want to match it with an exact value. You have an expression and the result of that expression you want to match with some exact value. Okay. So if the expression is matching with value 1, you want to perform some statement. Otherwise, if the expression is matching with some another value, then you want to perform some another statement. Getting? Selectively only. You are running these code blocks selectively. So every time you have to write that if expression is with value 1, run this. No, then else if expression is equal to value 2, then run this. Else if expression equal to value 3, then run. So instead of writing this chain of if else, more systematic, more elegant way is switch statement. It's just an alternative. But just remember, strictly, you have to use switch when you want to match a expression with different constant values. Okay, and with whichever constant value that expression matches, its associated code or statement should get executed selectively. Okay, now the basic switch syntax I'll tell you. Basic switch syntax, which is provided from Java 1.1. Then later in another versions, they have provided some enhancement in it, some modifications. Okay, then what those facilities they have added in the next versions, all we will see. In the latest version of Java, what more enhancement in switch is being done. Okay, so everything we'll learn. But the basic idea, I hope you got it. When to use switch statement. When you want to match an expression with different constant values. And with whichever constant value it matches, the associated block should get executed selectively. Getting? See here, a switch statement transfers control to one of the several statements. Means many code blocks you have written. Code block 1, 2, 3. So it will transfer the control to any of that code block, but based on the value of an expression. Getting? So you have an expression is evaluated with every statement. There are some value associated, constant value. With whichever expression that value matches, that corresponding statements will get run. Okay. So you can say it is an alternative to chains of if else. Instead of writing multiple if else if, okay, chain of if else, more systematic, more elegant way is switch when comparing a single variable against multiple constant values. Getting? The same thing you can do it using if else. As I said, if in the first if you'll check expression double equal to value 1, run the statement. Else if expression double equal to value 2, run the statement. But instead of writing so many if else, you can go for switch. Okay. And there are many enhancement in switch been done in the other versions we will be learning. First, I'll tell you about the traditional,
which is coming from Java 1.0. Means from the very first version of Java, the switch which is being provided, that is called as a traditional style. That first we'll discuss. And then I'll tell you about what in the next versions are provided. This is our traditional one. Switch, then you'll pass the expression. Switch is a keyword. Then in the round bracket, you have to pass expression. Then between open brace and close brace, you can see starting from first open brace till last close brace. It is the body of the switch. Okay, we call it as the body of switch. Okay, and then inside that you can have any number of case statements. Case, then the value, which is to be a constant value, remember. Then the associated code, again case, value 2, this can go on. Then we have a default statement, a default case. Now when all this are run, everything I'll tell you. Then what this break is useful for. So first the expression is evaluated. Rule wise, first the expression is evaluated and the value of that expression is matched with these constant value. ठीक है? So ये expression evaluate होगा और उसका value ये value 1, value 2 के साथ match होगा. Now that expression with whichever case value it matches, its associated code it will run. Like if expression matches with value 1, then the code associated with case value 1 is run. If it matches with value 2, then that code is run. If the expression doesn't match with any of the value, then default is run. That is the rule. When expression doesn't match with any of the value, then default code is run. Okay? Default is optional. Not necessary every switch should have default. Is optional. And if it is present, not necessary it is to be written at last only. You can write anywhere. This default can be written in the beginning, somewhere in middle, doesn't matter. Only remember, wherever you write in that switch body, wherever you write in the switch body, it is going to run only when the expression doesn't match with any of the case label or any of the case values. जब ये expression किसी भी case label के साथ नहीं match होगा, it will run default. You can write anywhere, in between, beginning, anywhere, but it is going to run only when expression doesn't match with any of the values. Okay, it is optional, not necessary. It is to be there only in every switch. Switch में नहीं है तो भी चलेगा. रहेगा तो जरूरी नहीं लास्ट में ही लिखना चाहिए. एक गुड प्रैक्टिस हम लास्ट में लिखते हैं. गेटिंग? एक गुड प्रैक्टिस होता है. क्यों? क्योंकि अगर एक्सप्रेशन सारे वैल्यूज से मैच करेगा तो लास्ट में किसको रन करना है, तो इसलिए हम डिफॉल्ट लास्ट लिखते हैं. सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली ऐसा कुछ रूल नहीं है. कहीं भी लिखो, लिखा नहीं तो भी चलेगा. रन कब होगा? जब एक्सप्रेशन मैच नहीं होता है. ठीक है? एंड अबाउट द ब्रेक. नाउ इफ यू डोंट पुट ब्रेक, देन देयर विल बी अ फॉल थ्रू. Getting? Means expression is evaluated, matched with the case label. That value is matching. It will run the code. But if you have not made a provision to come out of that switch, switch के बाहर आने के लिए provision नहीं किया है, जैसे break, तो what will happen? Fall through होगा. Fall through meaning it will continue running the next case. समझ रहा है? Case 5 कोड है बट ब्रेक ही नहीं लिखा है. फिर केस 7 अगेन, फिर ब्रेक भी नहीं लिखा है. ओके, तो व्हाट विल हैपन? दैट एक्सप्रेशन इज मैच्ड विद 5. इट रन्स द स्टेटमेंट ऑफ केस 5, बट एज देयर इज नो ब्रेक, देयर इज अ फॉल थ्रू, मीनिंग इट विल कंटिन्यू रनिंग द नेक्स्ट केस ऑल्सो. देयर ऑल्सो इफ ब्रेक इज नॉट फाउंड, इट विल कंटिन्यू रनिंग द नेक्स्ट केस till it doesn't get break or till the switch is not over. Means जब तक switch खत्म नहीं होता है या जब तक break नहीं मिलता है, तब तक वो fall through होते रहेगा. Getting? तो इसको enhance किया है अभी modern Java ने कि break की जरूरत नहीं है. And how the switch can return also value. Traditional Java का जो switch था
वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है. ओके, सो दिस रूल इज क्लियर. एंड देन ये वैल्यूज जो होता है, राइट, वो डुप्लीकेट नहीं आ सकता. यू कैन नॉट हैव अ डुप्लीकेट केस. लाइक इफ यू हैव गिवन केस 2 and after some time you have written case 1 plus 1 is not allowed. It's a duplicate case. Okay, then not necessary that values should be in the order only. ये केस वैल्यूज ऑर्डर में ही होने चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं. लाइक केस 5 है, फिर केस 2 भी आ सकता है, फिर केस 10 भी आ सकता है. करेक्ट. तो रूल्स याद रखो. एंड ये वैल्यूज जो होता है ना, वैल्यू जावा 1.0 तक, बाद में फिर थोड़ा सा एनहांसमेंट है, बट दैट टाइम मीन्स जावा 1.0 तक ये वैल्यू स्ट्रिक्टली नॉन लॉन्ग, ठीक है, इंटीजर ही होना चाहिए. फिर बाद में उन्होंने इनम्स ऐड किया, फिर बाद में स्ट्रिंग्स ऐड किया है. करेक्ट. फिर बाद में उन्होंने रैपर ऑब्जेक्ट्स भी अलाउ किए हैं, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो प्रोविजन दिया है, बट स्टिल आज के दिन में भी ये वैल्यूज फ्लोट नहीं हो सकते हैं. यू कैन नॉट हैव केस 4.5 और यू कैन नॉट हैव केस 3L. 3L means it will take 3 as long. 3L. So it is not allowed. तो स्ट्रिक्टली केस लेबल्स क्या होने चाहिए? नॉन लॉन्ग इंटीजर्स. अभी नॉन लॉन्ग इंटीजर्स में कौन कौन आएगा? बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर एंड इंटीजर. लॉन्ग इज नॉट अलाउड. एंड फ्लोट एंड डबल तो सोचो ही मत. एंड बुलियन तो है ही नहीं, बिकॉज मैंने मेंशन ही किया नॉन लॉन्ग इंटीजर. सो बुलियन इज नॉट देयर, लॉन्ग इज नॉट देयर, एंड फ्लोट एंड डबल तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है, बिकॉज केस लेबल शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन लॉन्ग इंटीजर्स. देन लेटर दे हैव एडेड रैपर ऑब्जेक्ट्स, बट रैपर ऑब्जेक्ट्स भी यही होने चाहिए, इनके ही रैपर ऑब्जेक्ट्स. बाइट का रैपर, शॉर्ट का रैपर, कैर का एंड इंटीजर. बाद में फिर स्ट्रिंग भी आ गया, जावा 7 में स्ट्रिंग्स अलाउ किए. करेक्ट. फिर जावा 5 में इनम्स ऐड किए. बट स्टिल आज के दिन में केस के वैल्यूज क्या नहीं हो सकता है? लॉन्ग एंड फ्लोट वैल्यूज एंड बुलियन. ठीक है, बुलियन नहीं हो सकता है, फ्लोटिंग नहीं हो सकता है, फ्लोट एंड डबल, एंड इंटीजर्स में भी लॉन्ग अलाउड नहीं है. करेक्ट. तो ऑल द रूल्स आई होप यू विल रिमेंबर. Right, guys? Give quick confirmation. Yes, I'm not able to hear you. Yes, sir. ठीक है. तो रूल्स सब क्या क्या याद रखना है? आई होप यू विल रिमेंबर द रूल्स. फर्स्ट, what is evaluated? Expression. Then the value of that expression is matched with these case values. Now, with whichever value that expression is matched, the corresponding code is run. ठीक है? And if there is a break, it will come out of that switch. ठीक है? Default optional. Not necessary to write last. You can write anywhere. When it is executed, when expression doesn't match with any value. Value need not be in the order. You can have in any order. Okay? But duplicate not allowed. Empty switch body is allowed. कभी ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में. स्विच, ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस, एम्प्टी स्विच बॉडीज अलाउड. लेबल जरूर, मैंने वैल्यू जरूरी नहीं ऑर्डर में ही होना चाहिए, एनी ऑर्डर. डुप्लीकेट अलाउड नहीं है. ब्रेक नहीं दोगे तो क्या होगा? इफ यू डोंट पुट ब्रेक, देन फॉल थ्रू. इट विल डू फॉल थ्रू. इट विल कंटिन्यू रनिंग द नेक्स्ट केसेस टिल इट डजंट गेट ब्रेक. ठीक है? ओके, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. ये बेसिक सिंटैक्स क्लियर हो गया. एंड वैल्यूज भी क्लियर है. वैल्यू स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? नॉन लॉन्ग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. नॉन लॉन्ग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, एंड वो भी नॉन लॉन्ग इंटीजर. मीन्स बाइट अलाउड, शॉर्ट अलाउड, कैरेक्टर अलाउड, इंट अलाउड, लॉन्ग नॉट अलाउड, बुलियन नॉट अलाउड, फ्लोट एंड डबल नॉट अलाउड. ठीक है?
Now, in Java 14, they have added one more switch expression called as arrow style. It is very much enhanced they have made, and they have made the programmer life more easy because of this arrow style. Getting preview version, like the preview feature, you can say it was in 12.13, and then they have made that feature permanent in Java 14. मीन्स कभी कभी कुछ फीचर्स कुछ वर्जन में डालते हैं बट देन दे रियलाइज कुछ काम का नहीं तो अगले वर्जन में निकाल भी देते हैं getting so therefore we say it is in a that preview feature was there in 12.13 but then permanently they added in Java 14. What is the speciality of this? Two specialities. For every case value no need to write break. एक मीन्स हर केस के लिए ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं. One. And second, it can act like a expression. Means you can collect something, what it is returning. You can say like switch is going to return something. Why? Because it's going to act as an expression now. I hope you should know expressions evaluate and every expression after evaluating give you some result. Getting? But the previous one is not an expression. Huh? The switch is not you pass expression, but this whole switch cannot act as an expression statement. Means previous ये जो style था उसमें ऐसा नहीं लिख सकते थे x is equal to and then switch. ठीक है and then you pass the expression then the whole body. तो ये पूरा जो switch है वो एज अ एक्सप्रेशन की तरह एक्ट नहीं कर सकता है अज्यूमिंग कि ये कुछ तो रिटर्न करने वाला है एंड फिर वो x में हम कलेक्ट करेंगे. नॉट अलाउड. मीन्स ये जो स्टाइल था इसमें कुछ रिटर्न का प्रोविजन नहीं है बट सच स्टाइल देखो ऐसे जो लिखा है मैंने स्विच यू पास समथिंग एंड फिर अंदर से वो कुछ रिटर्न करेगा जो आप x में कलेक्ट कर सकते हो. दैट इज पॉसिबल इन जावा 14 स्विच. ये इसकी खासियत है. From Java 14, you can call switch as an expression. Why? Because it is going to return something and you can collect that return value, which was not possible in the initial switch, traditional switch. Okay, see here. You will use switch keyword, then pass the expression. Okay, switch, expression. Then case values. Still constants वही है. Non-long integers, फिर strings allowed है, wrapper objects allowed है, जो अगले versions में दिया था. तो but still आज भी float, double, long and boolean allowed नहीं है ये value की तौर पे. तो expression you pass, then the expression is matched with the value. ये जो expression है वो ये values के साथ match होगा. And with whichever value it matches, it will evaluate and return the value. And here, instead of colon, you have to use arrow. And there is no need to put break. यहाँ कुछ fall through का problem नहीं है. ये जो भी आपने expression इधर लिखा रहेगा arrow के बाद, it will run that, evaluate that expression, return the answer, and that answer is stored in the result. Which we were not able to do it in the traditional switch, remember. This is more sophisticated. This is more elegant. And this is not just a switch control instruction. It is going to act like an expression. Okay? So expression evaluated, matched with the value. With whichever value it matches, the corresponding expression is evaluated and the answer is returned, which you store in result. नो नीड टू राइट रिटर्न. रिटर्न लिखना नहीं है क्योंकि रिटर्न सिर्फ फंक्शन के अंदर लिख सकते हो. मेथड्स, कोई भी मेथड बॉडी है ना तो उसके अंदर ही रिटर्न लिख सकते हैं. ऐसे स्विच स्टेटमेंट में नहीं है. ये 10 ऑटोमेटिक रिटर्न होने वाला है और वो रिजल्ट में आएगा. करेक्ट? इफ दिस एक्सप्रेशन मैचेस विथ वैल्यू 2 देन 20 इवैल्यूएट होगा एंड वो रिजल्ट में आएगा. करेक्ट? इफ इट डजंट मैच विथ एनी ऑफ द वैल्यू देन डिफॉल्ट रिटर्न होगा. Okay, only the criteria here is
after arrow, you should have a single expression only. Single expression. Understanding? Which will get evaluated and the result is stored in this result variable. But you may say like, no, but after arrow, I want a body. I want a block of code to be run. एक पूरा ब्लॉक रन करना है एंड फिर वो ब्लॉक में मुझे अंदर से कुछ रिटर्न करना है इन दैट सिचुएशन वी हैव टू राइट ब्रैकेट ऐसे एरो के बाद ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट you write your code whatever code you want and at the end you want to return something which will be stored in this variable that time you have to use yield keyword yield. Okay, and then give the value. It will return this value and that value will be stored here. But yield is to be used only when you write a block. When you're writing a single expression, no need of yield and all. Directly वो expression evaluate होगा और उसका result ये result variable में store होगा. ठीक है? See कितना easy बना के रख दिया है इन्होंने. So simplified they have made. No need of break. Okay? Fall through का problem नहीं है यहाँ. And you can return the result, which you can store also in a variable, which traditional switch case was not providing. Getting, guys? Now, what all supported types are there for this value? ये जो value है, उसका data type क्या हो सकता है? Getting? I'll tell you one by one. And अभी जो like 21 version का Java में तो here directly you can compare objects of respective data type. वो ऑब्जेक्ट भी चेक किया जा सकता है. गेटिंग? तो वो कैसे पॉसिबल है वो सब बताता हूं. ठीक है? नाउ दिस टेबल यू कैन चेक वेरी क्विकली. देखो जावा 1.0 दैट इज द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा. उसमें जो स्विच केस दिया था दैट टाइम वी वर ओनली अलाउड टू यूज दीज वैल्यूज कुड बी बाइट, शॉर्ट, इंट एंड कैर. Values can be byte, short, int, and char. Already I told you, na, non, long, integer, constants. Getting? Non, long, integer, constants. So long is not allowed, float double not allowed, and boolean not allowed. ठीक है? Then Java 5 में ये ही data types allowed है. Java 5 में भी यही चार, but you can use their wrapper objects. Understanding means वहां से आप wrapper object भी भेज सकते हो. वो auto unboxing and auto boxing unboxing का concept लगेगा. Getting? मैं चाहिए तो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं. Like ऊपर से आपने integer create किया है. Integer I equal to 30. Now don't worry, I is an object of integer class. But then you'll say, how can you assign primitive to it? So autoboxing में हमें वो provision दिया है. You can assign, but actually 30 is not going to get stored. First, your compiler will replace this line with integer dot value of. Integer dot value of. And what it does, it takes that 30, encapsulates that 30 in an object, and then it returns that object whose reference is stored here. Ultimately, इसमें object ही आएगा, but हमें ये facility दिया है, auto boxing का, that you can directly assign a primitive to a wrapper object. Internally, compiler is going to replace this code with integer dot value of 30. And then it will encapsulate that 30, wrap that 30 in an object of that class, and then the reference is stored here. Getting? Now that object you can pass to switch. देखो इधर switch को क्या pass कर सकते हो? Directly that object. Previously we were not allowed. Java 1 में सिर्फ ये primitive allowed थे, ये चार. अभी Java 5 में इन्हीं चार के ऑब्जेक्ट्स अलाउड है. तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है, बट केस में मैंने लिखा है केस 30 ओनली.
डजंट मैटर, यहां अनबॉक्सिंग होगा, ऑटो अनबॉक्स. So यहाँ implicitly it will do i.int val, and it will return the integer which is stored in it, that is 30, and that 30 is matched here. Getting? So that is allowed. पास्ट में हमारा 3-4 सेशन पहले एक टॉपिक पूरा हुआ था ऑटो बॉक्सिंग का. ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग कैसे होता है, पूरा एक टॉपिक हुआ था. So I hope that is clear. So Java 5 they allowed you to use wrappers also. After that, in Java 5, even enum is added. Now you'll say, what are enums? It is called as enumerated types. What it does is it creates constants but gives some meaningful words to it. ऐसे याद रखो. Constants बनाएंगे, internally वो constants बनते हैं, but वो constants का value याद रखने की जगह पे उन constants को हम meaningful names देंगे. Getting? Like I am creating enum colors. ओके, एंड इसके अंदर मैंने कैपिटल में रेड लिखा है, ओके, कॉमा ब्लू लिखा है. तो ऐसे हमने कॉन्स्टेंट्स लिस्ट आउट किए. इंटरनली इनको कुछ वैल्यू मिलेगा, ओके, आइडियली वो इसी के ऑब्जेक्ट बनता है. वो मैं टेक्निकली इंटरनल क्या होता है जब वो इनम टॉपिक को आएंगे तब पढ़ेंगे. ओके, एट दिस मोमेंट जस्ट रिमेंबर यूजिंग इनम्स यू कैन क्रिएट कॉन्स्टेंट्स विथ मीनिंगफुल नेम्स. कांस्टेंट ही बना है, बट वो कांस्टेंट कहाँ याद रखना है. लाइक एग्जांपल, रेड इज 5, ब्लू इज 7, ग्रीन इज समथिंग. तो वो नंबर याद रखने की जगह पे हम लोग उनको मीनिंगफुल क्या देंगे, ऐसे वर्ड्स, रेड, ब्लू, ग्रीन. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट नंबर लाइक केस 5 कोलन मीन्स अज्यूम करना है 5 मीन्स रेड का था, केस 7 मीन्स ब्लू का. Instead of that, can I write that meaningful word only over here? Case red, case blue. It becomes more meaningful, more readability. Getting? And the code becomes more meaningful code. Right? तो वो भी फैसिलिटी इधर ऐड हुआ. तो enums पास करने का प्रोविजन है. Then in Java 5, they allowed to use strings as well. Before that, strings were not allowed. Means you can write case double quote Monday, which was not allowed in the previous versions. एंड सी वगैरह के केस में तो आज भी अलाउड नहीं है. केस डबल कोट ट्यूसडे, ऐसे स्ट्रिंग्स लिख सकते हो कांस्टेंट की जगह पे. जो भी कांस्टेंट्स हम लिखते हैं ना, या वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, तो इन प्लेस ऑफ दैट वैल्यूज यू कैन यूज स्ट्रिंग्स एज वेल. गेटिंग? जावा 7. फिर जावा 10 में ये वेयर कंसेप्ट, अगेन एक टॉपिक आएगा कॉल्ड वेयर. व्हाट इज वेयर इन जावा, आई विल बी टेलिंग यू, डोंट वरी. अभी सिर्फ याद रखना है वेयर इज अ फैसिलिटी एडेड इन जावा 10 where what you can do is you can create a variable and its data type is inferred by the compiler. Means आपको data type बताने की जरूरत नहीं. This is more towards JavaScript. ये जो modern Java है ना, वो ज्यादा JavaScript की तरह जा रहा है. Means modern Java is trying to make Java as a scripting language. Getting? But still, it cannot lose its originality. So you can write like this, where x, and you have to assign the value directly. You cannot leave it where x blank. आपको value देना ही पड़ेगा. वो rule है. Now, what you did, you just created a variable x, assigned value 10, and you wrote where. You are not bothered about इसका data type क्या है. Compiler will infer the data type from the value. क्या value assign किया है ना? And compilation के समय ही है, not at runtime. ये रन टाइम नहीं होने वाला है. इट इज गोइंग टू हैपन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. इट विल इन्फर द वैल्यू, इट विल इन्फर द डेटा टाइप फ्रॉम द वैल्यू. अब वैल्यू क्या है? 10 होल नंबर. तो कंपाइलर इन्फर कर रहा है कि इसका डेटा टाइप इंट है, तो कंपाइलर विल रिप्लेस दिस विथ इंट. गेटिंग? एंड दैट चेंजेस आर डन बाय द कंपाइलर एंड देन बाइट कोड इज जनरेटेड. It will not go to generate bytecode before this is done. Getting?
तो वेयर को हम कहते हैं इन्फर डेटा, इन्फर्ड वेरिएबल्स। गेटिंग ऑन नो? लाइक अगर मैंने इधर वेयर x इक्वल टू डबल कोट राम लिखा, तो इट विल ऑटोमेटिकली इन्फर फ्रॉम दैट वैल्यू what? That it is a string. Compiler will replace this with string, and then it will move ahead to bytecode generation. Means ultimately it is going to replace it with the respective data type, but they have given facility to the programmer. That programmer doesn't have to worry about the data type declaration and all. Directly create a variable with where and assign the value. Whatever the value is, from that it will infer the data type and give the data type here. Understanding? So now you can pass the variables of that where type also to switch. देखो अगर मैंने लिखा है where x equal to double quote ram, okay, and then to the switch case I'm passing x is allowed. फिर अंदर आप केस डबल कोट राम, केस डबल कोट सीता, केस डबल कोट भरत लिख सकते हो. केस विथ स्ट्रिंग, केस विथ स्ट्रिंग, केस विथ स्ट्रिंग. बट बाहर से पास करते समय ऐसे वेयर टाइप वेरिएबल्स भी अलाउड है. जावा 10 सपोर्टेड. एंड फिर जावा 21 ने ये कंसेप्ट भी ऐड किया है, दैट इज सील्ड क्लासेस, ओके, एंड पैटर्न टाइप्स. अब ये पैटर्न टाइप्स क्या, आई विल बी टीचिंग यू. सील्ड क्लासेस अलग से लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा. मीन्स अलग सा टॉपिक है, व्हाट आर सील्ड क्लासेस, सील्ड इंटरफेसेस. These are all modern Java features and commonly asked in interviews, because interviewers want to check whether you are updated with the latest Java or no. Like जैसे अभी Java 26 थोड़े ही दिन पहले में, थोड़े मंथ पहले 25 था. नाउ 26 इज गेटिंग लॉन्च. तो सील्ड क्लासेस क्या होता है? तो सील्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी पास किए जा सकते हैं here. Okay, and what is the pattern matching and all? I'll tell you, don't worry. So that things are also added in Java 21. Okay? See, so long, float, double, boolean are still not supported. Means इतने सारे facilities दिए, but आज भी case और ये जो value होता है ना case का, that cannot be long, float, double, boolean. Okay, I hope it is clear. Now the sealed classes concept will be totally discussed separately. Yeah? So that time you will understand more. Pattern I am going to teach. इसमें मैं बताने वाला हूँ pattern match कैसे करते हैं. Okay, and where का concept भी हमें अलग से पढ़ना है. एक अलग से एक topic आएगा called where variables. So what are that inferred data type variable. ठीक है? But थोड़ा सा idea दे दिया मैंने. Little bit idea you got. Like you can write where x equal to and directly assign the value. During compilation only, compiler from that value, it will infer its data type and replace that keyword where with the actual data type. Okay, and then that variable you can pass to switch. Okay? So quick confirmation. इधर तक everything clear? Or if you have doubt, you can ask me. At least respond. Just don't unmute and keep. After unmuting, you just respond with yes or no. Yes, sir. Okay. Okay. Moving ahead. Now we will take some examples and all those things I'll tell you. Then I'll tell you about that how the pattern concept is, then arrow technique, yield, what that yield is, when to use that yield. That is in this syntax, remember. In this syntax, actually you have to write only one expression after arrow. And that expression is evaluated and the result is stored here. But if you have a block of code, then brace bracket you can write. But from that block, if you are returning some expression, then you cannot use keyword return. Return are to terminate functions. तो फिर इधर क्या लिखना पड़ेगा? yield. फिर वो yield जो भी रिटर्न करेगा वो यहां स्टोर होगा. ठीक है? Then coming to some examples. See here. ये traditional switch का example है. Right? From outside, I'm passing one integer value.
isn't it? Int day equal to 3. So we are passing that variable day. Now at runtime, it will check what the value is there and it will match with these values. They are called as case labels. Actually, these constant values are called as case labels. And this code is actually called as the ARM. Okay? It is actually called as a ARM. ARM. आर्म होता है ना हाथ अपने अपने दो हाथ तो अपने दो आर्म है ठीक है तो what is done day is passed right then it will match the value of that day with these labels and with whichever label it is matching the associated statements are run. And after running the statement, if there is a provision to come out of switch, it will come. If the provision means break, and no, there will be a fall through. So अपने केस में day 3 है. Is it matching with 1? No. Is it matching with 2? No. Is it 3? Yes. Yes, so it will come inside, do this execution, that is SOP Wednesday. After that break, as there is break, it will come out. ठीक है? Right? Then about this fall through, which I said. Like in this case, if you forget to put break, अगर ब्रेक डालना भूल गए तो कैसे प्रॉब्लम होता है बट कुछ केसेस में फॉल थ्रू जरूरी होता है बट अभी जो मॉडर्न जावा है उसने वो फॉल थ्रू का सोल्यूशन भी कैसे निकाला है वो आपको एक एक करके पता चलेगा ठीक है सो फॉल थ्रू बिहेवियर what is that fall through behavior that is when in that switch body you omit break omit करना मीन्स नहीं यूज किया हमने स्किप कर दिया उसको ओके हम बोलते हैं ना सिलेबस पढ़ रहे थे एग्जाम है एंड एक दिन पहले एंड फिर समटाइम्स यू डिसाइड कि नहीं है मैं चैप्टर ही ओमिट कर देता हूँ स्किप कर दिया आपने तो बोलते हो ना कि मैंने नहीं वो टॉपिक ओमिट किया है क्वेश्चन आया तो मैं उसको स्किप करने वाला हूँ गेटिंग समटाइम्स लाइक यू हैव एन इंट्यूशंस ना को पता रहता है कि ये ऑप्शन में आ जाएगा तीन में से दो तो कर लेंगे तो ये अगर आ गया तो चलो स्किप कर देंगे तो ओमिट break, if you are omitting break, then what will happen? It will continue running the next cases. And it will continue running the next cases till it doesn't encounter break or till the switch case is not over. Means जब तक switch case खत्म नहीं होता है या जब तक next break नहीं मिलता है तब तक वो चलते रहेगा तो omit break causes execution to continue into the next case. Example देखो ठीक है जैसे इस केस में फ्रॉम आउटसाइड यू हैव पास डे इफ डे इज 1 इट विल कम हियर ओके ना इफ द डे इज 1 इट विल कम टू केस 1 but as there is no statement and no break it will continue to 2 here also no break 3 4 and then finally it will wait in 5 and after stopping in 5 it will run this and as there is a break it will come out in short whenever the day is 1 or 2 or 3 or 4 or 5 in all case it will come and print this only means if your day is either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 it will stop here only weekday break and come out now same if the day is 6 it will come here no break therefore fall through 7 weekend. And if the day is 7, then also case 7, weekend, break. Now for last case, actually there is no compulsion to put break if it is a last case. So anyway, after last case, switch case is getting over. So it's not mandatory to put break in the last. Generally, why to put it? Making a provision for future enhancement. ब्रेक लिखने का क्या फायदा है कि अगर फ्यूचर में और केसेस बढ़ने वाले हैं तो आप जस्ट एंटर मारो और केसेस लिख दो गेटिंग मीन्स ब्रेक की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ना क्लियर फॉल थ्रू का कंसेप्ट क्लियर है Yes, sir. डन देन
about Java 14 switch case. Okay, in which I told you after arrow and इसकी एक beauty क्या है? What is the beauty of Java 14 switch case? So elegant, उन्होंने तो इतना अच्छा बना दिया इसको कि केस आपकी जो भी वैल्यू है एरो एंड जस्ट सिंपल एक्सप्रेशन जिसको आपको इवेलुएट करना है. ओके, दैट्स ऑल. नो नीड ऑफ ब्रेक और एनीथिंग. डायरेक्टली वैल्यू टू एक्सप्रेशन. एंड इसका एक खासियत है कि यू कैन ट्रीट दैट एंटायर स्विच केस ओनली एज अ एक्सप्रेशन. So whatever this result your switch case is returning, you can collect it in some variable, which was not true for the traditional switch. Traditional switch was a construct. It was a language construct. It was not acting like an expression. जो ट्रेडिशनल स्विच है उसमें ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ट्रेडिशनल स्विच कुछ रिटर्न ही नहीं कर सकता है, विच यू कैन कलेक्ट हियर, विच इज पॉसिबल इन दिस मॉडर्न वन. ओके, सी returns a value directly, no break needed. Okay, and each arm is self-contained, meaning you don't have to write any break or something, and you know it that case value one arrow, then immediately after that there is a expression. Okay, and if you have multiple statement to run in that context, then put open brace, close brace. But when there is a block and from that block you are returning something, then you have to return it using yield. You cannot use the return statement. Remember, return is the flow transfer statement. Return is like break and continue. Return is a flow transfer instruction. It will terminate the execution of a method and it takes the control back to the place where it is called. Method जहां कॉल किया वहां कंट्रोल लेके जाता है, इसलिए स्विच के अंदर रिटर्न नहीं लिख सकते, यील्ड लिखना पड़ेगा. I'll come to it. Okay, so the basic thing is clear. ये वाला देखो पहले एरो फॉर्म. अभी डेटा टाइप इंट पास कर सकते हो ना, एंड रिटर्न आपका चॉइस है क्या रिटर्न करना है. देखो स्विच यू हैव पास डे, इफ द डे इज 1 you have just returned double quote Monday. Automatic this value is returned and it is stored in day name. And no need of break or something. From outside, if day is 2, it will come here, Tuesday. This is the expression. And the result of that expression is stored in this day name. Same with 3. And if this date doesn't match with any of this, default. And default में क्या return कर रहे हो? Unknown. So जो unknown है वो ये day name में आके store होगा. ठीक है, एंड इसी में yield स्टाइल भी बताता हूं. Arrow form with yield. When to use yield? I told you. After arrow, you don't have just a simple expression. You have a block of code, and inside that block, you are returning something. So from that block, if you are returning something, then you have to return it using yield keyword only. Getting? See here. Like from outside, you are passing day name. अभी यहां डे नेम पास कर रहा हूं मैं. डे नेम पास. ओके, तो इफ द डे नेम इज मंडे और फ्राइडे और संडे, गेटिंग? तो इनके स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर्स है ना. मंडे 6 कैरेक्टर, फ्राइडे 6 कैरेक्टर्स, संडे 6 कैरेक्टर्स. ओके, तो यहां देखो केस में कैन बी राइट डायरेक्टली स्ट्रिंग्स. यस, आज ही बताया ना कि जावा 7 से केस लेबल्स क्या हो सकते हैं. From Java 7 onwards, case labels can be strings. And one more thing, can you see? No issue of fall through. You can directly group multiple values by putting comma. जैसे प्रीवियस केस में देखो, आपको ये सबके लिए एक ही कोड रन करना था. किसके लिए? केस 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए. इन सबको मिलके मुझे एक ही कोड रन करना है, तो आपको इंटेंशनली फॉल थ्रू लाना था. गेटिंग? बिकॉज यू कैनॉट राइट केस 1 comma 2 comma 3 comma 4 like that.
सारे लिखने एंड फिर एक साथ कोड. ट्रेडिशनल स्विच केस बता रहा हूं. बट इसमें देखो आप वैल्यूज ग्रुप कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग कॉमा. इट विल टेक और. तो फ्रॉम आउटसाइड इफ द डे नेम मैचेस विथ मंडे और फ्राइडे और संडे, ये बाहर का डे नेम इन तीनों में से किसी के साथ भी मैच हुआ तो व्हाट इज रिटर्न्ड? यू हैव जस्ट रिटर्न 6, तो वो 6 रिटर्न होगा, नम लेटर्स में आ जाएगा. Getting? But if that day name is matching with Tuesday, then you are writing a block of code. And in that block, first statement is printing, that is processing Tuesday. And then here also you want to return something which will get stored in this variable. But that you have to return using yield. See, yield returns the value from a block. Getting? And in case of default, what you want to do, whatever day name is passed, okay, its length you will return. Length is a method of string class. Length ये किस class की method होती है? String class की. Getting? So you can invoke it via string object. Day name is sure going to be a string object. So day name, which is a string object, dot length. It will return number of characters in it. Return क्यों? क्योंकि yield लिखा है. So whatever that length is returned, it comes here. Okay? I hope you got it. So always remember, whenever in a case you are going to use yield, then you have to use brace bracket. Getting? Yield is mandatory inside a block in a switch. Getting? And please remember, you cannot use which keyword? Return. Return allowed नहीं है यहाँ. Return सिर्फ कहाँ allowed होता है? Methods के अंदर, functions. To terminate the function and take the control back to the place where it is called. वो फंक्शन जहां कॉल हुआ है उधर कंट्रोल वापस लेके जाने के लिए रिटर्न लिखते हैं. यहां हमें सिर्फ कुछ वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो यू हैव टू यूज yield. सो yield इज अ न्यू कीवर्ड एडेड इन जावा. ये मॉडर्न जावा का है. इट इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल. सो ऑब्वियसली yield कीवर्ड कब ऐड हुआ रहेगा? 12-13 में एज अ प्रीव्यू फीचर, एंड देन इन 14 इट इज मेड परमानेंट एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूड. ठीक है? तो yield is mandatory inside block. ओके, अगर आप एक सिंगल एक्सप्रेशन ही लिख रहे हो तो जरूरत नहीं. बट अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हो तो ब्रेस ब्रैकेट जो लिखना पड़ेगा. एंड इनसाइड दैट इफ यू आर रिटर्निंग समथिंग देन यू कैनॉट राइट जस्ट 7. आपको yield 7 लिखना ही. दैट इज मैंडेटरी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. We'll take some examples also based on it. इसके ऊपर based examples भी देखेंगे. No worries. And then quickly about this, one more thing I'll tell you for today's session. That is multiple labels per case. तो ट्रेडिशनल केस में कैसे लिखते थे? इन ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसे लिखते थे. मैं सपोज आपको ये कोड रन करना है, दैट इज एसओपी लो एंड ब्रेक. तो ये कोड कब रन करना है? when the case label is 1 or 2 or 3. मीन्स केस लेबल 1 रहने दो या 2 रहने दो या 3 रहने दो. इन तीनों केस के लिए मुझे यही कोड रन करना है. द सेम कोड. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द ट्रेडिशनल स्विच लाइक दिस, केस 1 कोलन केस 2 कोलन केस 3. एक के नीचे एक भी लिख सकते हो. मीन्स in this case compulsory we used to introduce which concept? Fall through. इसमें जबरदस्ती fall through डालते थे. So if your value is 1 it will come here, but after that there is no break, therefore it will drop to 2. Here also no break, therefore it will fall through and continue to 3 and run this. तो 1 रहेगा तो भी यही रन होगा, 2 रहेगा तो भी यही रन, एंड 3 रहेगा तो भी यही रन. इसी को थोड़ा एलिगेंट किया है, सिंप्लीफाई किया है इन मॉडर्न जावा, दैट इज जावा 14. जस्ट राइट कॉमा. डोंट यू थिंक? सो इजी इट इज मेड. केस एंड as many case labels, just separate it with comma. Case 1, comma 2, comma 3, arrow, and this thing. So when it will execute this code, whenever your case label is either 1 or 2 or 3,
मीन्स ऊपर से जो भी एक्सप्रेशन आपने पास किया रहेगा, तो वो एक्सप्रेशन 1 के साथ मैच हुआ है या 2 के साथ या 3 के साथ, कोई भी रहने दो. Okay, it will run this. Some more things we have to discuss. Next is about default. So whenever in the switch case, when we add default, when this default is executed, whenever your expression doesn't match with any of the case label, whatever expression you're passing, and if it doesn't match with any of the case value, then default is executed. And no compulsion that default is to be put at the end of. Generally, in a systematic syntactic way, we write at the end. In a syntactic order, we write at the end, but it's not mandatory. You can write anywhere, in between, in beginning, at end, but only executed. It is executed only when none of the values are matched. Okay. And in every switch, default is not mandatory. Okay. So when default is executed, when no case matches. So to the switch, we are passing expression. And in case, we are writing case labels, that is value, case value 1, case value 2, case value 3. So if that expression doesn't match with any of the case value, then it executes default. Okay. And according to the rule, it can appear anywhere. Grammatically, syntactically, it says that you can write anywhere. But generally, a good practice is we write at the end. So can appear anywhere in the switch block, not just at the end. Okay. Generally, a good practice that first we write all the case values and then at the end we write default. Like in if and else, if a if else block you write. So generally we write a else block at the end only. No? Same way. So it can appear in the switch block anywhere. No rule. Okay. It's not like you have to write at the end, but it is evaluated only when your expression doesn't match with any of the case values or case labels. Okay. Then in every switch, you have to write default is not mandatory. Like in a switch body, if there is no default case, no problem. That's what I've mentioned, optional, but recommended as a safety net. Meaning when you want to perform something when none of them is matched, then a good practice, write default. Okay. As an example, I've written, see, in this case, we are passing an expression X. Okay. And you're matching that X with the case label. Now, according to the standard rule, you should write at the end, a good practice, but not mandatory. You can write anywhere. So I have written in the beginning, but though you have written in the beginning, doesn't matter. It is going to get executed only when this X doesn't match with 1 because you have only one case label. So X value is matched with this case label. If that X value is 1, then case 1 will execute. Getting 1 and break. Now, in this case, actually, break was not needed, but it's a good practice to write breaks so that in the future, if you're adding more cases, in the future, if you're going to add more case, it's more better to put break already. Why? Because we have to just put enter and start typing the next cases. Okay. So if that X matches with 1, then it will run this, right? But if it doesn't match, then it will run default. Okay. And break. It will come out. Okay. So I hope that part is clear to you. Then in the previous session, we have seen that what all things we can pass to a switch, right? And I have told you today also float and double and long is still not allowed. Okay, according to the uh, versions of Java, I've told you. I hope you remember that. I've given you that complete table. See, I've told you in the very first version of Java, what all things were allowed? Byte, short, int, char. Meaning, in short, what was allowed? Non long integer.
Only integers allowed, integers only allowed. But in that integers also long was not allowed. See, only byte, short, int, char. Long not allowed. And float and double to you don't think only. Okay. Then in next version, like 5, they added wrapper objects. But that wrapper objects also of these 4 types only. Okay. Then even enum was introduced. Then from 7, they introduced string. And then in the later versions, they have introduced where and sealed classes. So this sealed classes and all is to be studied in detail. About pattern, I'll be telling you today. And about where also a separate topic will be there. But in the last session, little bit knowledge I have given you. Okay. So in Java 7, they introduced string. Before that, only what was allowed? Non, long, integer. In the very first version, byte, short, int, and char. Only these 4 data types. In the next version, their wrappers were allowed and the enum concept was allowed. Now in 7, they introduced, like in 5, I said, now 7, they have allowed to use string as well. Okay. So if you're passing string, then their comparison is done on the equals method. Okay. Like to the switch, you'll be passing an expression. Expression means a variable which is of type string. And then in the cases, you'll be writing strings, right? Double quote, whatever it is. Okay. Not only single character, it can be anything. Double quote, Ram, colon, double quote, Sita, whatever it is, doesn't matter. Now, what that X you have passed, obviously it is a string. So that string is compared with this string. So the comparison is done on the basis of equals method. Means internally what Java will do, it will call X dot equals. Okay. And then it will pass this value to it. Double quote A. Getting? So equals is a method of which class? String class. Obviously, this X is a string. You have passed X as string. That's what we are discussing. No? Now we are discussing that only. That to the switch, what is passed? String. And they allowed to pass string from version 7. So whatever string is passed, that string is compared with these case values, which are strings, constant values. Okay. So it will compare this X with A, compare with X with Ram, compare X with Sita. But the comparison is done on what basis? Equals method. The comparison cannot be done like this. X double equal to double quote A. If it does comparison like this, then it is not actually comparing the values, it is just comparing the reference. Whenever you are using two double equal to for objects, ऑब्जेक्ट के लिए अगर टू डबल इक्वल टू है तो वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू नहीं कंपेयर होता है इट जस्ट कंपेयर्स रेफरेंसेस getting so we don't want to compare reference we want to compare the value in that object and that is done by equals method so x dot equals a so if x dot equals double quote a come true it will execute this case. If x dot equals double quote a come false, then it will compare with Ram. So it will compare x dot equals double quote Ram. If x dot equals double quote Ram come true, then it will execute this. Means in short, it is comparing this string with this string. X is also a string and double quote Ram is also a string. So it is comparing these both strings. Okay. If these both the strings come same, it will execute that code. If x dot equals double quote Ram come false, it will check with C. Now, if it doesn't come equal with anyone, then default case is run. I hope you know that. Just now we have discussed it. Okay. So comparison is done via equals. And remember, equals is case sensitive. Huh? Like from outside, you have passed RAM, RAM.
small. But in the case you have written case double quote R capital AM, still it will not match. Okay, it is case sensitive. See here. And this switch case style I have used of the latest version. Arrow 1, I hope you know it. In the last session only we have discussed the Arrow version is provided in Java 14. In 12 and 13 it was a preview version. Then permanently they, they made it permanent in Java 14, this arrow concept, which acts like a expression also. Means you can collect the result of a switch. Here we are not doing. So what I'm passing and what is the main advantage of this arrow notation? You don't have to write break. The traditional one which we are writing, a colon, जो ट्रेडिशनल जावा 1.0 से जो था स्विच केस, जहां हम लोग यहाँ कोलन लिखते थे, तो in that case if you write colon and then you write statement, then you are supposed to make the provision to come out of it by writing break. So break becomes optional in this case. ये एक benefit है arrow version का. Getting? So from outside you are passing one color as a string color. Then that color dot equals double quote red. So ये color object dot equals double quote red. If it is matching, it will execute this statement, that is stop. But if the color value is not matching with red, then it will check equals with green. Not matching, then it will check equals with yellow. And none of them then default. That is unknown color. Okay, I hope you're understanding it, right? Sure, understand. The rule is clear. I hope it is clear. It is matching color dot internally. Yeah? Internally, it is doing like this. Color dot equals. Color is a string object. We have to learn one separate topic on string buffer, string builder. Okay, a separate topic will come. Don't worry. So color dot equals, and then it will keep matching that color object. Color is also string object. So color dot equals, and then one time it will pass red. Okay, and if it comes true, means it indicates what? That the color value is also red. Red is compared with red. True, it will execute this. But if colors dot equals double quote red come false, then it will try to check with green. Otherwise, it will try to check with yellow. If none of them, then default. Correct? Only the problem in this case is if suppose this color contains null because it's an object. As it's an object, can you store null in it? Yes. String color equal to null if it is containing. And you have written this switch case. In that case, it may throw null pointer exception. Why it does like that? Because I've shown you it is calling this equals method for comparing. कंपैरिजन के लिए ये कलर ऑब्जेक्ट किसको इन्वोक कर रहा है कलर डॉट equals and then it is passing this each string to that equals and whenever equals return true it executes that code but the thing is you can call equals method only if that color object contains a reference अगर ये कलर ऑब्जेक्ट में क्या नहीं है रेफरेंस इसमें अगर नल है तो इज इट लीगल टू इन्वोक अ मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड मुझे बताओ एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड वेरी लॉन्ग बैक व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा जिसमें एक फीचर हमने पढ़ा था जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर इफ यू रिमेंबर करेक्ट अगर एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ऐसे किया है ठीक है एंड देन यू आर कॉलिंग ई डॉट वट एवर मेथड गेट सैल और समथिंग ठीक है ऐसे मेथड आप बाद में इन्वोक कर रहे हैं तो ये लीगल है क्यों क्योंकि ई में रेफरेंस है में ई इज अ ऑब्जेक्ट एंड ई इज रेफरिंग टू दैट ऑब्जेक्ट ऑन द हिप पे मेमोरी एलोकेट हुआ है ओके एंड इट्स रेफरेंस इज देयर इन ई and now you are allowed to invoke that get sal method e dot get sal but suppose e में reference ही नहीं है
E में null है. E is not holding only the reference of an object. E में null है. So is it a good practice to invoke get sal? No. Runtime, it will throw a exception. Null pointer exception. Understanding? Why? Because we are trying to invoke a method via null reference. E में तो reference ही नहीं है. E अगर किसी object को ही refer नहीं कर रहा है, तो आप उसके methods कैसे invoke कर सकते हो? Understanding? Clear? I told you, na, when the baby is only not born, how can you file an income tax for that baby? How can you purchase mutual funds and shares and properties in the name of that baby? Getting? Which in India it may happen. Getting? India is not for beginners, बोलते हैं ना. Getting? But कायदे से तो नहीं होना चाहिए. Getting? So when the object is created, the reference is collected, then only you can access the methods of that object. Isn't it? Same thing will happen here. इधर इंटरनली ये क्या कॉल करने वाला है अभी बताया था मैंने. ये कंपैरिजन के लिए किसको कॉल करने वाला है? ईच एंड एवरी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए. इज इट गोइंग टू कॉल कलर डॉट विच मेथड गाइस? इक्वल्स. अभी बताया ना. ये कंपैरिजन किसके बेसिस पे होता है? ऊपर लिखा भी है स्लाइड पे. करें? कंपैरिजन इज स्ट्रिक्टली डन ऑन व्हाट बेसिस? इक्वल्स. एंड केस सेंसिटिव है. Getting? So is it going to call color dot equals and one by one ये string pass करेगा ना? First time will it pass red? अगर red के लिए true आ गया तो it will execute that code. SOP stop. अगर colors dot equal double quote red false है तो it will check for green. बट ये इक्वल्स मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं वो क्यों? क्योंकि कलर्स में रेफरेंस है इसलिए. बट अगर कलर में नल रेफरेंस है तो इज इट लीगल टू इन्वोक इट? नो. इट विल थ्रो विच एक्सेप्शन? नल पॉइंटर एक्सेप्शन. प्लीज रिमेंबर. सो इसलिए क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? ये पूरा एक ट्राई कैच में लिखना चाहिए. A good practice. A good practice is to make your code robust. This whole thing you have to put it in a try catch. Getting? So we will be learning exception handling also. A separate topic will come on exception handling. Don't worry. Okay. So always guard against null. Passing null throws null pointer exception. मीनिंग ये कोड अगर आपने प्रॉपरली ट्राई कैच में डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. if you put this whole thing in a try and a catch and अगर गलती से ये कलर ऑब्जेक्ट क्या आ गया नल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. गेट? इंटरनली वो कलर डॉट इक्वल्स कॉल करने जाएगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड कंट्रोल डायरेक्टली कैच में जाएगा. इन कैच यू विल ग्रेसफुली हैंडल इट एंड इट विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग कोड. Getting? But if you directly write like this and the color contains null, it is sure going to throw null pointer exception. I'll show you that demonstration. Don't worry. ठीक है? मैं उसका demonstration भी दिखाता हूँ. Then in Java 5, they introduce enum also. Now we will just see the example of using enum in a switch. Okay, but later we will discuss one separate elaborated topic only on enum. What are enums and how to create them internally? What are they? Okay, a separate exhaustive topic only on enum. Now just remember, enum is also a user-defined type. It is called as enumerated type. And enumeration means list of values. When you have a list of value, when you list out everything, you're enumerating. When you have a function at home and you create a list that invitations, then caterers, then whatever decoration, like that, you create a list means what? You're doing enumeration, listing out. एक के बाद एक. You're traveling somewhere. Okay. So when you're going to travel, then you create a list that ये लिया, ये लिया, ये लिया, and tick mark करते जाते हो. Means what? You have created a list. That is, the list means what? It is a enumeration. And one by one, you're going through that list. Okay. So enumeration type gives you facility. It is a reference type only. It comes under non-primitive type. It is a reference type. It gives facility of creating constants
with some meaningful name. Getting meaningful names. Like, for example, internally, you are going to store true and false. So in the previous days, like in C and all, true was represented as 1 and false was represented as 0. So it was the programmer's responsibility that he has to understand कि whenever 0 means it is false, whenever 1 it is true. But instead of writing 1, if you give some meaningful name to it like this, true, okay, and internally it is 1 like that. And for this, we are giving meaningful name as false. And maybe internally it is 0. But instead of using that 0 and 1 in the code, if you use this word true, word false, will it make more readable code? Code is readable. The code is becoming more meaningful, and you don't have to remember these numbers that for false, what is the number, for true, what is the number. Getting? So this is making more readability is more, it makes your logic more meaningful. Instead of using the constant numbers, we use such meaningful words. Okay, so that you can do it using enum. Okay, and then that enum values you can use in switch case. Okay, so see here, I've created a enumerated value this way, enum season. Internally, it is a reference type only, yeah? Means it is creating a new user defined type. The type name is season. And in that, we have listed some constant values. That's what I said. Like in the switch case, instead of spring, summer, autumn, winter, I'm using 1, 2, 3, 4. And then case 1, case 2, case 3, case 4. So you only have to remember case 4 means winter, case 1 means spring. But instead of that, 1, 2, 3, 4, if I give some meaningful names to it, okay, and then I'm using that names here. Case spring, case summer, case autumn, case winter. Is it making more readable? It is making the code more meaningful. Instead of case 1, the coder only knows that 1 means spring. The coder only knows 2 means summer. But instead of using that numbers, I'm using such constants. So code has become more meaningful code. It has become more readable code. Okay, more understandable. And you don't have to remember the internal values. Instead, directly such constant words are written. Okay, so you created an enumerated type, then you're creating a variable of that type, summer s equal to, and any value you can pick because they are internally statics. So you can directly access it by dot season dot summer. Actually, this spring, summer, they are automatically object of that season only. These three, four, they are automatic object of season only. So when we will discuss about enum, that I'll tell you internally how this is getting converted. The spring is getting converted to season object only. Summer also season object. Okay. So I'll explain that. Now just remember such constants are listed and then you can pass that and match with that value. Okay. So from outside I've passed that S, which from Java 5 this said you can also pass enums so that S is compared with spring. If it is matching, this is executed. And see, here I am using arrow concept. So if I use arrow, no need to write break. This is Java 14 style. Getting? Then if S is matching with summer, then this code is executed. If it is matching with autumn, then this code is executed. And if it is matching with winter, then this code. Okay. But only the limitation of this is whatever constants you have listed here in that enumerated type. वो enumerated type में जितने भी constant list किए उन सबका केस आना ही चाहिए. You cannot skip. मीन्स यहाँ लिस्ट किए 4 बट केस में सिर्फ 2 ही लिखे हैं तो वो नहीं चलेगा. Getting every pros को एक cons होता ही है. Means when you get some benefit, indirectly you are going to get some disadvantages also. Yes or no? When you are getting advantages of AI, there are some drawbacks also of AI. Huh? You should know it. So many drawbacks. वो जो तुम लोगों ने spot out किए तो है ही है. There is one major
problem of AI. That AI applications consume around 3 to 5% more electricity also. Getting? मीन्स अगर वो एआई एप्लीकेशन किसी सिस्टम पे चल रहा है तो वो इंटरनल पावर भी उतना कंज्यूम करता है, तो वो भी इनडायरेक्ट इफेक्ट है. Getting? बाकी के इफेक्ट्स तो है ही है. ओके. विथ enums the compiler warns if not all constants are covered. मीन्स यहाँ अगर अपने सब कॉन्स्टेंट्स नहीं कवर किए, getting? तो इट कंपाइलर विल गिव यू अ वार्निंग. मीन्स यहाँ आपको सबके सब क्या कवर करने पड़ेंगे जितने भी कॉन्स्टेंट्स है. getting? यू कैन इंटरनली थिंक लाइक दैट, दैट जैसे ये स्प्रिंग समर है, इनको कुछ इंटरनल वैल्यूज दिए, एंड वो वैल्यू याद रखने की जगह पे वो वैल्यू को हमने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स दिए. अंडरस्टैंडिंग? एंड फिर केसेस में वो वैल्यू लिखने से अच्छा वो वर्ड्स यूज करो. जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. So the coder only has to remember that case 4 is a winter, case 1 is a spring. But instead of that, वो जो numbers है, उनको अगर आपने ऐसे मीनिंगफुल नेम्स दिए, एंड वो नेम्स ही इधर केस में यूज किए, तो डोंट यू थिंक योर स्विच केस लुक्स मोर मीनिंगफुल स्विच केस, मोर रीडेबिलिटी है, more meaningful लगता है, and moreover it is less cryptic. Numbers will be more cryptic, and even you don't have to remember that numbers. Internally, compiler will take that work. Actually, here in Java, it is not a number. Like in C, they give inter number. Here, actually, it converts them into objects only of the same enum. ये जो सीजन है ना, उसी का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो वो इंटरनल टेक्निकल थिंग्स हम देखेंगे जब when we'll reach to enum. Now, just I wanted to tell you, in enum you can sorry, to switch case you can pass enum as well. That is, in switch case, passing enums are also allowed, introduced in Java 5. Get it? Now, some may say, like, instead of that, can I create finals and do? Yes, that is also allowed in Java. ठीक है? Finals करके भी आप कर सकते हो. Like this, I'll tell you that too. You should remember that as well. See, आप लोग ऐसे finals create कर सकते हैं. Final integer string equal to 1, whatever value you want. Final int string के बाद क्या था? String summer. Okay. 2, final int autumn. ठीक है. And last, final int winter. This way also you can do. Means you can create 4 integer constants, give them values. You're giving name to those constants, and they're constant because it is final. Final means once initialized cannot be changed. Again, final topic also will come. Keyword final. So in detail about keyword final we'll be learning. Okay, where all final word can be used for a variable, for a method, for a class. Okay. And now in the switch case, suppose you're passing some season. Okay. And then in the case, you can use those constants like this, spring equal to, sorry, spring arrow, and then whatever logic you want, like case summer arrow, and then whatever logic. This is also possible, but here you have used these constants. Their values you can modify. Here, everything internal compiler decides what values to be given. This is more easy. Just list out the constants and directly start using in switch. Okay. Okay. Only the limitation that you have to use all those constants in the case. Okay. I hope it is clear to you. Right? Just give me quick confirmation. Then we can move to Yes. Yes, sir. some more features in switch. You see, in switch, so many things are there. Just we are talking about instruction may construct switch, but in Java, so many variations have happened. May enhancement.
starting from first version of Java till latest. Correct? Now in Java 21, they have allowed you to match it with a variable also. Means how enhancement is done, that from outside you can pass different objects. Getting? You can pass different object, and in the case you can match it with its type. Like if that x is an integer, then do this. Means from out, but it should be object only. That is the rule. In that case, whenever you do pattern matching, that time you have to pass a object. Means that object can be any object. It can be wrapper object, it can be string object, it can be your user defined object, they can be sealed object, anything. Okay. So you can pass object and then you can check their type, that if it is of integer, then do this. Whatever object you have passed, if it is of type integer, right? Then do this. If it is of type float, then do this. But integer means I capital, wrapper. Wrapper object. Wrapper object means it is an object. Object means non-primitive, reference category. They all are on the heap. Okay? So this way also you can do. Like previously what we have discussed, the very old pass the expression and match that expression with the constant values. है ना, बाहर से एक्सप्रेशन पास करना है और वो कांस्टेंट वैल्यूज के साथ मैच करना है. वो कांस्टेंट वैल्यूज इनिशियली क्या हो सकते थे? प्रिमिटिव नॉन लॉन्ग इंटीजर्स. मीनिंग सिर्फ क्या अलाउड थे? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड कैर. बाकी कोई भी डेटा टाइप अलाउड नहीं, बुलियन अलाउड नहीं, फ्लोट अलाउड नहीं. फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं चार के रैपर ऑब्जेक्ट अलाउ किए, फिर इनम्स अलाउ किए, फिर स्ट्रिंग्स अलाउ किए. गेटिंग? अभी डायरेक्टली पैटर्न मैच कर सकता है. मींस यू कैन चेक देयर डेटा टाइप एंड टेक द एक्शन. गेटिंग? मींस बाहर से पास किया हुआ ऑब्जेक्ट अगर इंटीजर टाइप का है तो ये एक्शन लो, अगर बाहर से किया हुआ ऑब्जेक्ट फ्लोट का है तो ये एक्शन लो. लाइक दैट. ठीक है? सी अलाउज मैचिंग बाय टाइप. ओके. अभी कभी कभी कहोगे लाइक बाहर से ऑब्जेक्ट तो पास किया है, राइट, बट वो ऑब्जेक्ट दो जगह पे मैच करना है, सेम टाइप का है. ऑब्जेक्ट बाहर से मैंने एम्प्लॉय पास किया है, बट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए मुझे दो अलग केस एग्जीक्यूट करने हैं. गेटिंग? तो केस तो रिपीट हो नहीं सकता है, तो यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा कंडीशन यूजिंग वेयर. गेटिंग? आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. सी, यहां तक क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ये मैं कंसेप्ट क्या है इसका, कि अलाउज मैचिंग फॉर द टाइप. ठीक है? एंड स्टिल आई एम यूजिंग वर्जन 14.1 ओनली. वर्जन 14 का एक बेनिफिट क्या है? एरो कंसेप्ट. ओके, तो एज देयर इज द एरो कंसेप्ट, नो नीड टू राइट ब्रेक. One advantage. Second, when you're using arrow concept, from here you can directly return a value and you can collect it in the variable. Means your switch is no more a control instruction, it is like a expression. Means Java 14 से switch एक expression की तरह भी behave कर रहा है. Getting? देखो इधर जो arrow है and ये string लिखा है, तो डायरेक्टली ये स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा और ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. ओके. एंड लास्ट लेक्चर अगर किसी ने अटेंड किया रहेगा, याद करो, ये एरो सिंटैक्स में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, एंड उसके अंदर से भी कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, तो यू कैन नॉट राइट रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न अलाउड नहीं है. तो क्या कीवर्ड यूज करना है? इफ एनीवन रिमेंबर यू कैन टेल मी. नो, एक भी याद नहीं है, एक को भी याद नहीं है, या अटेंड ही नहीं किया था. एक किसी ने किया रहेगा, शामली ने अगर ज्वाइन किया है, गर्भ भी था शायद लास्ट टाइम. सो ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस, तो यू कैन राइट लाइंस ऑफ कोड, बट उसके अंदर से भी कुछ रिटर्न करना है जो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो यू हैव टू राइट यील्ड. यू कैन नॉट राइट रिटर्न. गाइस, रिटर्न नहीं लिख सकता है. रिटर्न इज अ फ्लो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन.
Return is like break and continue. Return stops the execution of a method. किसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुकाना है तो रिटर्न लिखते हैं. And return takes the control back to the place where it is called. Getting? ये उसके लिए नहीं है. It is just yielding means it is giving the output. So yield 5 लिखा है. So it is just throwing that value and that is collected in this result. Okay? तो yield सिर्फ किसके अंदर ही यूज किया जा सकता है? In a switch, the arrow style switch, arrow style वाला जो switch है उसमें, and moreover when in any case you have a body, so वो body के अंदर से कुछ रिटर्न करना है तो. अगर डायरेक्ट सिंगल वैल्यू है रिटर्न कर रहे हैं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो वैल्यू लिखो. देखो इधर लिखा है जैसे. ओके, सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग अ ऑब्जेक्ट. अब कहोगे इधर ऑब्जेक्ट में कलेक्ट किया और इधर तो 42 है. नो प्रॉब्लम, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर. ऑटो बॉक्सिंग होगा. इट विल बी लाइक दैट. ऑब्जेक्ट ओबीजे is equal to, I'll show you here. ठीक है, हमने अगर ऐसे लिखा है ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू 42, व्हाट जावा कंपाइलर रिप्लेसेस इट, इस तरह से रिप्लेस करना है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 42. What will Java compiler do? Remove this 42 because it is impossible to assign a primitive to an object. Can you assign 42? 42 is a primitive, guys. Can we assign a primitive variable to an object? No. This 42 has to be converted into object. But from Java 5, they are saying autoboxing technique is there. They have given you a facility that just write directly, compiler will replace that 42 with this code. What will happen now? Integer dot value of 42. What this integer dot value of will do? It will create an object of integer class. ये integer dot value of क्या करेगा? एक object बनाएगा. किस क्लास का? इंटीजर का. उसमें वो 42 रख देगा and फिर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहां आता है. Getting? And it is legal to store a child object in a parent. Actually यहां से child का ऑब्जेक्ट आया. Integer is a child class and उसका parent कौन है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ये सबका parent है. गॉड क्लास है, ऐसे याद रखो. It's a cosmic class. Getting? And all the classes in Java are ultimately derived from their ultimate root. और उनका अल्टीमेट रूट कौन है? ऑब्जेक्ट. Getting? तो एक्चुअली ये लाइन इस लाइन से रिप्लेस होने वाली है, याद रखना. Object obj equal to 42 is going to get replaced with this thing. And what is this part going to do? Integer dot value of 42. It is going to encapsulate, means it is going to auto box. It is going to put that 42 in an object, guys. Diagrammatically, I'll try to show you. देखो, तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएगा किस क्लास का? इंटीजर रैपर क्लास का. इंटीजर रैपर क्लास है ना उसका. उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या एनकैप्सुलेट कर देगा? प्रिमिटिव 42. एंड फिर उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा एंड वो रेफरेंस अल्टीमेटली किसमें स्टोर होगा? वो ओबीजे. गेटिंग? देखकर ऐसे हमें लग रहा है कि ओबीजे में ही 42 स्टोर हुआ है, बट according to the language rule, is it legal to assign a primitive to an object? Impossible. ऐसे कभी अलाउड है क्या? 42 प्रिमिटिव में कभी प्रिमिटिव 42 कभी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल. नहीं होने वाला है. तो कंपाइलर एक्चुअली इसको ऑटो बॉक्स करेगा. ये 42 को क्या कर देगा? ऑटो बॉक्स. मीनिंग इस जगह पे क्या कॉल कर देगा कंपाइलर? इंटीजर रैपर क्लास की स्टैटिक मेथड वैल्यू ऑफ एंड 42 पास. अब वो वैल्यू ऑफ क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. किसका? इंटीजर का. वो 42 उस ऑब्जेक्ट में एनकैप्सुलेट कर देगा. उसके किसी प्राइवेट डेटा में ये 42 स्टोर कर रहा है एंड फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न जो ओबीजे में स्टोर. अल्टीमेटली नाउ इट इज अ ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू दैट ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट हमने पास किया. Getting? And now you're matching its type. What's mentioned in the line, you can see.
ये टाइप का पैटर्न मैचिंग वाला स्विच केस जो जावा 21 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया उसका टाइप मैच करता है। गेटिंग? इट विल मैच द टाइप, एंड जहां मैच हुआ है टाइप, वो वाला केस रन होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट चेक करता है कि वेदर इट इज इंटीजर, तो वो इंटीजर ऑब्जेक्ट है ना, भले वो ओबीजे में रखा है, बट ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? राइट साइड ऑब्जेक्ट किस टाइप का बना है? इंटीजर क्लास का। तो ये ओबीजे इंटीजर टाइप को मैच हुआ, इसका टाइप अगर इंटीजर टाइप को मैच हुआ, तो वो ओबीजे में जो रेफरेंस है वो ये आई में आ जाएगा। आई एक टेम्पररी वेरिएबल है। गेटिंग? एंड वो हमने इधर कोड में यूज किया है, देखो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर प्लस आई। अब बोलोगे इधर आई डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में प्लस किया, कैसे चलेगा? पीछे के सेशंस याद करो, लॉन्ग बैक आई टोल्ड यू, व्हेन यू यूज द ऑब्जेक्ट इन अ प्लस साइन, एक स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट अगर प्लस में यूज किया, तो वो ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग कॉल करता है। इट विल कॉल टू स्ट्रिंग। ये आई का टू स्ट्रिंग कॉल होगा। ये आई में एक्चुअली ओबीजे का ही रेफरेंस आया गाइस, यही रेफरेंस आई में आ गया। आई इज द लोकल वेरिएबल, आई अंदर स्विच केस के अंदर बना है। गेटिंग? तो ये आई भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर। गेटिंग? तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये एक स्ट्रिंग है, प्लस आई एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर रैपर का। तो पहले वो आई किसको इन्वोक करेगा? ये आई कौन सी मैजिक मेथड को कॉल करेगा? जस्ट नाउ आई टोल्ड, टू स्ट्रिंग। एंड वो टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है? इसके अंदर जो रखा हुआ 42 है, उसी का स्ट्रिंग फॉर्म डबल कोट में। तो डबल कोट 42, सो नॉन पॉजिटिव इंट डबल कोट 42, दोनों ज्वाइन एक स्ट्रिंग बनेगी, और वो स्ट्रिंग ये रिजल्ट में आ जाएगी। ठीक है? बट बाहर से अगर ये ओबीजे हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अगर भेजा रहेगा, तो वो इसके साथ मैच होता है। बाहर से अगर ऑब्जेक्ट किसका भेजा है? स्ट्रिंग का, तो इट विल मैच विथ दिस थिंग। अंडरस्टैंडिंग? वो ऑब्जेक्ट का टाइप स्ट्रिंग से मैच हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में आ गया? एस। एंड फिर ये रिटर्न होगा स्ट्रिंग प्लस, और वो जो भी आपकी एस पास की है, राम है, सीता है, वट, एंड फिर ये स्ट्रिंग ये रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट में नल है, तो केस नल, दिस इज मोर बेनिफिशियल कंपैरेटिव टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जब हमने स्विच केस फॉर स्ट्रिंग लिया था, भूल गए गए, स्विच केस फॉर स्ट्रिंग, तब मैंने बताया था ना, अगर ये नल है तो वो इक्वल्स कॉल करता है ना, तो इट में थ्रो विच एक्सेप्शन, नल पॉइंटर। वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, दैट प्रॉब्लम वोंट कम, बिकॉज डायरेक्टली केस नल ऐसे मैच कर सकते हैं। सो अगर ये ऑब्जेक्ट में नल है, तो ये इसके साथ मैच होगा, तो वो नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो रिजल्ट में आ गया। अगर ये किसी भी तीन ऑब्जेक्ट से नहीं मैच हो रहा है, इंटीजर, स्ट्रिंग या नल, देन डिफॉल्ट आएगा, और ये जो समथिंग एल्स वो इधर आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इंटीजर है, और उसमें भी दो केसेस आपको हैंडल करने हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा व्हेन एंड कंडीशन डालना पड़ेगा। देखो, तो बाहर से ऑब्जेक्ट इंटीजर का है, बट उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, देन ये वाला मैच होगा। एंड अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो ये मैच होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? इंटीजर। ऑब्जेक्ट का टाइप कौन सा है? रैपर क्लास इंटीजर। करेक्ट? तो ऑब्जेक्ट का टाइप इंटीजर है, तो दो केसेस मैच हो रहे हैं, तो फिर इनमें फाइटिंग कैसे रिजॉल्व होगा? बाय दिस एक्स्ट्रा कंडीशन। करेक्ट? तो अगर ऊपर से इंटीजर ऑब्जेक्ट आया और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अब कहोगे इधर ग्रेटर देन कैसे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर? ये रैपर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां अनबॉक्सिंग होगा गाइस। when we have written I greater than 0, and I is the which object? Integer object। तो डायरेक्टली कभी ऑब्जेक्ट जीरो से कंपेयर नहीं होता है। यहां अगेन एक मेथड कॉल होती है, डॉट इंट वैल्यू, और अनबॉक्सिंग करेगा। आई के अंदर जो प्रिमिटिव रखा है ना 42, वो बाहर आ जाएगा।
एंड फिर वो 42 जीरो के साथ कंपेयर होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो दो चीजें चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट का टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ये दोनों अगर आता है तो ये वाला। बट अगर वो इंटीजर ऑब्जेक्ट ही है बट उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 42 नहीं है तो ये वाला इंटीजर मैच होगा। अंडरस्टैंडिंग? सेम वे इन स्ट्रिंग ऑल्सो यू कैन डू। लाइक आपको स्ट्रिंग के ही दो केसेस हैंडल करने, स्ट्रिंग के ही दो केसेस। तो आपको इधर आगे कुछ कंडीशन डालना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग्स मोर देन 5 लेंथ के हैं, इनका अलग, एंड 5 से कम लेंथ है उनका अलग। तो हियर यू कैन राइट व्हेन I डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5, you can do like that. Getting? So, in this case, what you understood, here you are just passing a object and checking that object's type, and वो object जिस type के साथ match हुआ, वो case execute होगा. Getting? And as हमने arrow लिखा है, so it is just building this value and returning that value, and that value is coming here. Getting? And याद रखना इसमें अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखना है एंड लास्ट में कुछ वैल्यू रिटर्न करना है तो आपको ब्रैकेट में वो कोड लिखना है। एंड लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न करोगे वो कैसे रिटर्न करोगे? नॉट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, यूजिंग यील्ड। ओके, ठीक है। तो ये देखो, फिर कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि इधर जो ये आ है या एस है, ये लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं एंड बाहर से जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसी का रेफरेंस ये लोकल वेरिएबल में आ जाएगा। ओके, सो केस टाइप वेरिएबल, देखो केस टाइप वेरिएबल, जनरल सिंटैक्स इज लाइक दैट, यस और नो? केस कीवर्ड, फिर टाइप एंड फिर वेरिएबल। तो ये जो बाहर से पास किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस ये टेम्पररी वेरिएबल में आ जाएगा। सी बाइंड्स द मैच्ड वैल्यू टू अ लोकल वेरिएबल। जैसे इधर ये एस, ये आई, ये लोकल वेरिएबल है, ये स्विच केस के अंदर ही उनका लाइफ है। देयर लाइफ इज ओनली विद इन स्विच केस। ठीक है। एंड व्हेन किसके लिए है? ऑप्शनल है। व्हेन यू पास अ ऑब्जेक्ट and if it is of some type, okay, so for the same type you want to handle two different codes, means object का type string ही है but string के लिए आपको दो अलग कोड हैंडल करने हैं। करेक्ट? तो आपको k string s ऐसे दो बार लिखना अलाउड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? you cannot write case string s once and again the same thing you are writing, it will be a duplicate case। तो फिर कैसे करोगे? क्योंकि आपको बाहर से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही पास करना है बट उसी स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए दो डिफरेंट कोड है। तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। लाइक अगर वो स्ट्रिंग का लेंथ 10 के ऊपर है तो ये वाला, एंड 10 के नीचे रहेगा तो ये कोड। तो यू विल ऐड वन मोर कंडीशन, व्हेन s डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10 डू दिस, एंड अदरवाइज केस स्ट्रिंग s, दैट वे आल्सो यू कैन डू। ओके, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट। So when adds a guard, additional Boolean condition, okay, and you can match null value also. And as you are matching that case with null, here there is no chance of null pointer exception. Null pointer exception नहीं आएगा। Means अगर आपका object null भी रहेगा तो भी ये case के साथ match हो जाएगा directly। Getting? So null can now be handled explicitly. No issue of null pointer exception. You don't have to write this whole thing in a try catch की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नल भी है तो भी ये केस के साथ मैच हो जाएगा। ओके, एंड ये कॉन्सेप्ट सील्ड क्लासेस के साथ भी, बट अभी व्हाट आर सील्ड क्लासेस अभी इमीडिएटली नहीं समझेगा। यू हैव टू वेट फॉर इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें खत्म होएगी फिर उसके बाद हम लोग ये टॉपिक भी देखेंगे, सील्ड क्लास, विच इज ऑल्सो एडेड इन अ मॉडर्न जावा। वो ओरिजिनल जावा में ये नहीं था, ये वेरी बहुत बाद के वर्जन में ये concept of sealed classes and sealed interfaces सब डाला हुआ है। ठीक है? So I hope this part is clear to you, right? Now we have to start with that iterative part, but before that we'll take some examples also based on this। ठीक है?